The entrepreneurial journey starts with an idea. This creativity is the biggest asset of entrepreneurs. The first startup story is an artistic inspiration turned into a creative and a successful journey. Let's hear from Sharad Dabra, a Chitkara University alumni who created SD Academia in the year 2015. So my journey started in college. I was in my third year, dancing around, managing fest and all of that. But then I wanted an escape and I started sketching. When I finished my college, I was placed in Ericsson Global. I was really happy in my job. It wasn't making me pretty enthusiastic about it. That was a sign कि मुझे शायद नहीं करना है. I'm probably in a wrong position. तभी मुझे जोधपुर से call आया. So मेरे एक old client थे. He said, "Can you design a cafe for me?" And there it was a sign. That deal got closed. I did one cafe, second cafe, third, fourth. So I came back from Jodhpur and Sunil sir called me over to Explore Hub. He offered me 1 year of free space at CEED. Who does it? I was in awe of Chitkara in totality. That what great platform have they built for entrepreneurs like me. Then he introduced me to some great clients in the Tri-City region. As we talk about Hyatt Regency Chandigarh, वो project हमें मिला and उसके बाद it came rolling in one project after the other. The good part was I earned my package within probably 3 months down the line, which I was actually offered in the company earlier. The Indian art industry grew more than 1 billion rupees from 2014 to 2017. After starting their journey in 2015, SD Academia quickly built its network in all cities of India. But for Sharad and his team, this was just the beginning. So Sharad was busy with his own artistic skills and passion, but the company needed a structure. So wherein I filled the gaps. Everything was going perfect. One day Sharad came to me and he told me that he really wanted to teach his own talent to multiple people because he feel when he was young he could not get that opportunity. So our journey began. We successfully ran our 2 academies and we were spreading the laughter all over. Be it a kid, be it a woman of 70-year-old, everyone was loving the academy. So everything was going perfect until the lockdown happened. When the lockdown was announced, Sharad was not believing that this lockdown will happen for a week or 2 or a month. Then Sharad came up with the idea कि let's start an online academy. We had no clue how to do it because if we actually teach people, they don't have the art equipments at their home. So here at my home, I was working all around the clock, creating videos. Ridhima was there talking to the vendors, making sure कि हम online इस academy को run कर पाएं. Our major aim was getting these supplies and delivering at your doorstep so that you can try everything at your door. So we had got 100 orders. That is something we never expected, and we had to create the kits which has 40 art supplies in it. It was so difficult. Sharad just came to my home. We opened our kits, we packed each and every item, and we took almost 2 days, 2 nights to pack those 100 kits. We were ready with the 100 kits with no complaints. That's what we call a challenge turned into opportunity. We at SD Academia are working days and nights to nurture future artists, designers and animators of India. We believe life is like a blank canvas. You choose the colors you wish to fill in, and then your journey will be no less than a beautiful piece of art. It is rightly believed that creative ideas, when painted, perfectly lead to new innovations. Shivam and Neha, co-founders of an AR/VR startup called 6DOF Solutions, created an augmented reality-based interactive platform for kindergarten kids at Chitkara University. हम लोगों ने गैप एड्रेस किया जब मैं अपने मम्मा के स्कूल में गई टू जस्ट विजिट हर रिगार्डिंग माई एजुकेशनल प्रोजेक्ट. तो उसके बाद मैंने वहाँ पे किंडरगार्टन सेक्शन में देखा द टीचर्स दे वर स्ट्रगलिंग विद द क्यूट लिटिल किंडरगार्टन किड्स टू ग्रैब देयर अटेंशन एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउडेज कि बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए. मैं ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही हूँ, दैट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी. तो मैंने सोचा वाई डोंट वी ऐड दैट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ताकि मोर इमर्सिव एंड इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट हम दे पाएँ इन बच्चों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. After some initial research, we decided to go with augmented reality.
to make a learning kit that will provide immersive experiences to the kindergarten students. So the concept was ready, but we needed guidance and funds to develop the product. So one day at work, we met Neeraj sir. He told us about CEED and got us an incubation space there. With the right mentorship of the Chitkara Center for Entrepreneurship Education and Development cell, we got various grants and our product was ready in 6 months. We were lucky to have constant support of Dr. Archana Mantri ma'am throughout our journey. Whenever we got stuck, she was the first person to help us out every time. After a detailed validation of the product to be launched, Shivam and Neha started testing for the final launch in March 2020. Alas, the pandemic was announced. The early stage learning of more than 3 million students was affected nationwide. It was very depressing, but we wanted to help, so we decided that we should do something. This month what we did, जो हमने मार्केट में अपनी किट्स देनी थी, कमर्शलाइज करनी थी, तो हमने फ्री सैम्पल्स अपने नोन और रिलेटिव्स वगैरह के किड्स को दे दी ताकि वो टेस्ट कर पाएँ और हमें इनपुट्स दे पाएँ अबाउट इट्स यूज़ और इफ़ दे वांट एनीथिंग टू ऐड इन दैट. सबसे इंटरेस्टिंग इनपुट हमें एक पेरेंट्स से मिली जो कि उनका एक चाइल्ड ही हैड हेयरिंग इशूज़. सो ही वांटेड कि मैं ये किट कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपने दूसरे बेटे के लिए. He wanted a solution, but he was like, I am helpless, I cannot do anything about it. After 3 months, we came up with another version of our application, which could be used by specially abled kids, ताकि वो भी हमारी application को उतना ही अच्छे से और interaction से use कर पाएँ जैसे बाकी kids use करते हैं. Initially, our aim was just to add technology in education. बट कोविड गेव अस अपॉर्चुनिटी और चांस ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव और इन्हांस कर पाएँ और हर बच्चे के पास प्रोवाइड कर पाएँ. सो नाउ आवर विजन इज टू प्रोवाइड आवर लर्निंग टू एवरी किड रिगार्डलेस ऑफ एनी बैरियर. Learn a Little is an augmented reality based kit for kindergarten students which helps them learn basic English skills like alphabet, word building and spelling. India has seen a considerable growth in hospitality and food startups. Education inspires entrepreneurial minds to lead the path of excellence. On the way to success, the courage to continue counts Mr. Sushil Kalra, a professor and faculty at Chitkara University, Punjab, and the founder of Young Rays, created a healthy breakfast food menu using sattvic ingredients to promote good health among young children and adults. If we talk about the idea came into existence one day. A co-founder who happened to be a chef as well as a fitness freak came down to me and spoke about, sir, why don't you join the gym? So I said, okay, fine, but chef, can we do something about to make ourselves healthy internally as well? Where I mean was to have a proper nutritional and balanced diet. Young rays का मतलब है young rays of sun. The rays which touches the earth in the very morning appears to be the very healthy for the whole world, for our body as well. मेरा discussion Chef Manpreet से हुआ. Chef Manpreet said, yes sir, we will definitely look into it and will make some product which will be healthier, full of nutrition, balanced, as well as it will be connected with the sattvic food as well to our roots of India. The biggest challenge I faced while developing this recipe was to make the recipe healthier as well as tastier. So I have selected different kind of ingredients like amaranth flour I have used, buckwheat flour I have used numerous different types of seed into it, and all these ingredients club together and create this recipe. The ingredients of Young Rays come from different parts of India and are resourced very carefully. These chosen ingredients make the product tasty and healthy. The product is now getting shipped to major cities in North India and other parts of the country. We picked up departments of the Chitkara University. We gone there, we given them the presentation, make them aware what exactly we had made. It was wonder that we got orders as well. One of the department, one lady was so excited about the product that she has given an order for a bulk of 3 months collectively. So while having the huge orders coming in, we sat together and thought about it. Now it's the time to go for production. We plan to hire few of our interns to help us in the production. Now gradually we are getting a lot of orders.
Now our team has grown up to more than 35 people working under young race, and we are planning to open few more bakeries so that the production should be increased to meet up the demand. Two words if I speak about, one is the interest, the other one is the passion. Interest may get changed as per the time, but the passion, what you have in yourself, will remain forever. So if you're very passionate about the entrepreneurship, just go for it. Entrepreneurs of the 21st century have the willingness to work and work with passion. They have solved infinite problems of the society and have changed the world dramatically. Pancham Kajla, a Chitkara University alumni, along with his wife Shakti, founded a wonderful startup called Anuprayas in the year 2014. हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा पर्पस क्या है, हम मतलब यूजली इन सब के आंसर्स ढूंढते हैं और इन सब के आंसर्स हमें बचपन से ही मिलते हैं। वैसे ही मुझे मेरी स्टोरी और अनुप्रयास के जो आंसर्स हैं एक छोटे से बचपन के इंसिडेंट से मिले। एक दिन मैंने स्क्राइब के लिए वॉलंटियर किया, जिसमें मुझे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को एग्ज़ाम के लिए हेल्प करना था, मतलब मुझे क्वेश्चन एंड आंसर ट्रांसलेट करने थे और वो मेरे को बहुत मज़ा आया। फास्ट फॉरवर्ड इन्फोसिस 2010, मेरा फिर से यही इंटेंट रहा कि मैं कुछ ना कुछ सोसाइटी की तरफ मैं करता रहूं। एक दिन मेरे को मेरे एक विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड का कॉल आया, बोला कि पंचमना अभी के भी मेरे हॉस्टल आओ, और देखा कि कुछ 15 विजुअली इम्पेयर्ड लोग एक साथ रूम में बैठे थे और उसमें जो मेरा फ्रेंड था वो काफ़ी मायूस लग रहा था। तो उसने बोला कि पंचमना हमारे एग्ज़ाम्स ओवर हो गए थे और मुझे अपने गांव जाना था, जिसके लिए मैं रेलवे स्टेशन पे गया और मैंने किसी से पूछा कि प्लेटफॉर्म पे जाना है और उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इस वाले प्लेटफॉर्म पे जाइए। तो मैं वेट करता रहा और आधे घंटे बाद मुझे लगा कि ट्रेन काफ़ी लेट हो गई है और फिर जब मैंने इंक्वायर किया तो पता लगा कि मेरी ट्रेन ही मिस हो गई है। इतना ज़्यादा गुस्से में था तो उसने बोला कि यार आप कुछ डिफरेंट क्यों नहीं करते, कुछ इम्पैक्टफुल क्यों नहीं करते, आप जाके रेलवे स्टेशन में ब्रेल सैंडविच लगाओ। तो मैं बहुत उससे मूव हुआ और मैं अपने कैजुअल्स में और एक बैग लेके रेलवे स्टेशन पहुंच गया, डीआरएम ऑफिस। डीआरएम सर ने मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट किया इस इनिशिएटिव के लिए। हम आपको पूरा इसमें बैक करेंगे और आप ही लीड करेंगे। Pancham came to me with an idea of making premises accessible with railways. We went to all the blind schools around there, took a lot of feedbacks, did a lot of surveys. We came up with platform indicators, which was one of the basic solutions of leading a person to a right platform. 22 नवंबर 2015 को हमने इंडिया को एक पहला स्टेशन दिया जिसमें ब्रेल सैंडविचेस लगे हुए थे। जो ये ब्रेल प्लेटफॉर्म डिस्प्ले है, ये ब्रेल प्लेटफॉर्म डिस्प्ले हर एक रेलवे स्टेशन, हर एक जगह लगने की ज़रूरत है। अनुप्रयास का ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा है, उनको सपोर्ट करना चाहिए और ये सब ब्रेल डिस्प्ले हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक जिले पे जगह जगह लगना चाहिए। मैसूर स्टेशन के बाद लाइफ चेंज हो गई, बहुत सारा प्यार मिला। हम आउटलुक मैगजीन में आए, हम टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आए और फिर धीरे धीरे हमने इंडिया की जो पहली ब्लाइंड फ्रेंडली रेलवे ट्रेन है मैसूर टू वाराणसी वो की और वो उसका एप्रिसिएशन हमें पीएमओ लेवल से भी आया। तो पिछले 7 साल से अनुप्रयास को हम बैंगलोर से ऑपरेट कर रहे थे और फिर 2020 में हमने प्लान किया कि चलो लेट्स मूव टू आवर बेस चंडीगढ़, और वापस आते ही हमने सोचा कि अपने पुराने लोगों से कनेक्ट करें। तो मैं पहुंच गया चितकारा कॉलेज, जहां मुझे हरकिरण मैम मिले और फिर उन्होंने हमें सुमीर सर से कनेक्ट करवाया जो कि सीड को इनिशिएट कर रहे हैं और उनके थ्रू हमें अब चितकारा का इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं। स्पेशल मेंशन एंड स्पेशल थैंक्स टू इंडियन रेलवेज कि उनके इनकरेजमेंट के कारण हमने प्रोजेक्ट स्नोबॉल होते गए, हमने और स्टेशंस पे काम किया। अनुप्रयास जो एक मूवमेंट भी है वो मेरी नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो इस मूवमेंट को को-ओन करते हैं, जो इस इनिशिएटिव को अपना समझते हैं, और वो तभी होता है जब आपका इंटेंट अच्छा और क्लियर होता है और वो खुद ब खुद अपनी आइडेंटिटी को साइड पर रखकर उसको सपोर्ट करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ते हैं।